top 3 or 5 qualities that you are having so that we can recommend you for the post of drug inspector. Devices which will be controlled will be, if they are used for any therapeutic purpose. So in case of medical devices, what is that single window clearance system? What basically that portal name is? What exactly quality management system? One is drug technical advisory board and second one is drug consultative committee. In my opinion, दोनों policy making and policy implementation दोनों equally important. तो आप शासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं या फिर प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं? That as a drug inspector, you have been given the authority to inspect a site. So what is your going to be the first action you are going to take? अंकित जी, आपका डेफ हमारे पास है। अभी आपने जो है बेसिक डिटेल हमें भेजी हुई है, उसमें आपने बताया हुआ कि आप कैमूर बिहार के रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा बेसिक अपने बारे में इंट्रोडक्शन में बताना चाहें तो बताएं जी। Sir, my name is Ankit Tiwary. I was born and brought up in Kaimur district of Bihar. From there, I received my primary and secondary education. After that, I moved to IIT BHU, where I received my BTech and MTech as a part of integrated dual degree. And apart from academics, I also take keen interest in playing and watching cricket and other sports also. ओके, सो आप बिहार के रहने वाले हैं, राइट? जी। जो मैं आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन देख पा रहा हूँ, उसमें आपने यू हैव मेंशन्ड इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री बीटेक प्लस एमटेक. So apart from normal degree, what is going to be the basic difference between this integrated dual degree? सर, इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री अगर आप आईआईटी से अगर 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम में इनरोल होते हैं तो 1 साल में आप एमटेक भी कर सकते हैं. यस, तो वो साथ-साथ ही हो जाता है. ओके, सो एक्सक्लूसिवली ये आईआईटी बीएचयू की तरफ से दिया जा रहा है या फिर ये कोर्स जो है पैन इंडिया जो है अदर यूनिवर्सिटीज द्वारा भी रन किया जा रहा है? सर, अदर यूनिवर्सिटीज के द्वारा भी होता है. अभी तो जैसे सीयूईटी के द्वारा भी दिया जाता है. लेकिन कॉलेज में मेरा इनिशियल एडमिशन बीटेक में हुआ था, फिर बाद में सीजीपीए के बेसिस पे आईडीडी में भी चेंज हुआ था. आप कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं, थोड़ा सा, चूंकि आप जो है चयनित होने जा रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस. सो इस बार आपने देखा ही होगा कि मेडिकल डिवाइसेस के लिए जो है फार्मेसी प्लस नॉन फार्मेसी बोथ बैकग्राउंड कैंडिडेट्स फॉर एलिजिबल, राइट? सो आप की जो स्किल सेट है वो इस पोस्ट के लिए कैसे सेट कर पाती हैं, कैसे मैच कर पाती हैं? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? और जैसा कि मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हुई है, इस पोस्ट के लिए इंजीनियरिंग प्लस फार्मास्यूटिकल दोनों का नॉलेज होना जरूरी है. और मेरी ग्रेजुएशन भी इसी लाइन्स पे हुई है. लाइक हमें बेसिक फार्मेसी पढ़ाया गया है और इसके अलावा हमें इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स भी पढ़ाए गए हैं. इसके अलावा वी आर ऑल्सो इनरोल्ड इनटू इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस सच एज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल, so and electrical engineering also. So this, I think, very much is aligning with the role of medical device officer. Just explain us top 3 or 5 qualities that you are having so that we can recommend you for the post of drug inspector. Yes, sir. So what the exactly? First quality, yes. So the first quality I would like to mention is my knowledge which I have gained in post graduation and graduation through my college through interdisciplinary branches, which is the basic requirement for this post. Apart from this, everybody has gained the knowledge related to this. What extra qualities you are having so that we can as a panel recommend you for the post of DI? What extra you are having from the other candidates? As a normal honors degree, generally students get their degree in like pharmacy, or if they are enrolled in engineering, they get degree in engineering only. But what my degree provides me is I have knowledge of both pharmacy as well as engineering aspect. Like medical devices field is evolving, it is also including AI, ML, and software as medical device aspects. So I have knowledge of both. Like I worked on software also, and
I have knowledge of pharmacy also. So I think this gives me an edge over others. In our conversation, you have talked about the software and use of particularly AI that are being mostly used in this particular era. So, Yes. do you feel that the software used that are associated with the medical devices that comes under the Regulatory Authority of Medical Devices Rule 2017? Sir, general fitness tracking apps which are not exclusively mentioned by the manufacturer, like it is, if manufacturer mentions that it is used for diagnostic purpose, then it doesn't comes under the purview of medical device officer and regulatory authority. But To if it is, specifically specify that which nature of software are being used for the medical, they are being controlled or not? yeah, they are being controlled. The government has now notified that they will be now controlled, and the devices which will be controlled will be if they are used for any therapeutic purpose, or like if they are helping any device for diagnostic purposes, and if the software itself is being used for diagnostic or therapeutic purposes, they will be regulated under this. So, as per our conversation, you are saying that some specific category of softwares are being regulated by this medical Yes, devices in 2017. See, yes, sir. as we all know that we are having a regulatory authority, that is CDSCO. So CDSCO is Yes, basically regulating drugs aspect as well as you can say cosmetic aspect as well as and medical devices. So yes, sir. what was the exact point or what was the exact cause why we have came up with this separate law, that is medical devices in 2017, when we are having this Drugs and Cosmetic Act? It was an intact rule. Then why there was a Sir, need of, yes, yes, sir. Sir, initially when Drugs and Cosmetics Act was introduced in 1940s, there was not much development in this medical devices sector because of lack of innovation in technology at that time. But in the present scenario, a lot of technology is evolving with the uh, coming of internet and AI software etc. So there was a need to distinct between these two, like uh, general drugs and which are directly being administered, and softwares and also medical devices. So nowadays medical devices are being used on a large scale. So there was a need to separate both of these to regulate them better. yes, there is a two term. One is medical device officer and medical device testing officer. Is there any Yes, sir. difference for which post you Sir, are going to be recommended? Do you have any clear cut idea? yes, sir. Medical device officers are the inspectors which go on field to test the quality of medical devices, and medical devices testing officers are the officers who check about the quality and efficacy of the device in the laboratory. So the form I have filled and I am getting interviewed for each for medical device officer. Medical device officer, right? Yes, sir. Yes. Since our government is, you can say, they are more focusing on ease of doing business index. That is Yes, an sir. index that is given by the World Bank, so that we can have a preference of trade in our country. Yes, So, sir. taking care of that, government has taken many of the initiative, and in that scenario, they have come up with the concept of single window clearance system. Apart Yes, sir. from having that particular file is going to through the multiple stages, they have just come up with a system of single window clearance system. So, in Yes, case sir. of medical devices, what is that single window clearance system? What basically that portal name is? Sir, government has notified it under Sugam portal under CDSCO, That name is Sugam, CDSCO. right? Yes, sir. Yes. So under this portal, manufacturer who want to establish a factory or a manufacturing plant, he or she had to apply under only one application. He had to apply for only one application. Under that, he gets every registration and licenses under one portal only, like from starting from uh, land acquisition to electricity to uh, all the workers registration and uh, manufacturing requisites. So this acts as a single window clearance for the medical devices. But now it is available only for Haryana state, but
it will be spread How for all the. specifically this Sugam portal is going to help in case of manufacturers? Sir, it will firstly reduce the time, like the clearness needed from many departments. So an applicant will not need to like go from one department to another for the clearances. Okay, And got your point. Do you really think this is going to ease the business in our India by this process? yes, sir, like other countries like USA and Japan, they provide this kind of facility. So it will increase the product competitiveness of Indian products, and foreign manufacturers and FDI routes will be eaten by this move. Okay. See, what you can understand, I just want to know your opinion on some points. If you have heard about that, medical devices are being classified in different categories: Class A, Class B, Class C, and Class D. Yes, I want to know your opinion in case of Class C and Class D, which is going to be the yes. licensing authorities, and what exact you can say what exact authorities do we are having as a central licensing authority in case of C and D? Sir, for C and D, the Central Licensing Authority, which acts under Drug Controller General of India, is the main authority to provide So licenses for DCGI this. is going to be the central licensing authority, right? Yes, sir. Okay. Yes, you can proceed. And uh, sorry, sir, I just forget the question. Can you please repeat? Uh, if you can give some examples of Class C or Class D, some medical devices, if you are having. Uh, Under Class C, grouping agents, ventilators are being grouped, and under Class D, HIV test kit, and uh, pacemaker is grouped. See, in case of medical devices, there is a very important role of quality management system. Yes. What exactly quality management system is? आप इसके बारे में कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. So currently ISO 13458 is being used as international standard of quality management system. It provides for regulatory compliance and product safety and post-market surveillance also. Since you have given a terminology that is post marketing surveillance, Yes, means sir. once a market that has been came into the market, we are having some vigilance on that particular product. Yes, So sir. in case of that medical devices, so what is going to be the program that is associated with the Indian government that is running currently? That It program, is material vigilance. It is called as material vigilance program, who is going to be the which nodal agency for this program? CLA is the nodal agency as far as I No, can no, no. think. CLA is not going to be the nodal agency. Some institutions are like the, if you have heard about this, pharmacovigilance. A Yes, pharmacovigilance sir. program of India is there, material vigilance program of India is there, hemovigilance program of India is there. So different institute, different organization, they have given the responsibilities. Like in case of pharmacovigilance program of India, they have given the authority as a nodal center, or you can say national coordination center for this Indian Pharmacopoeia Commission. But in case of material vigilance, which is going to be the nodal agency that is going to execute. Well, sir, I'm not able to recall it. So you are not very clear about this. Sir, I am aware of the material vigilance program, but I am not aware of the exact agency which is implementing it. Yes. If you've gone through the medical devices rules 2017, there is a term Yes, notified body. Could you please yes, explain sir. this term? Notified body. Sir, yeah, these notified bodies are accredited under national accreditation body, and these are responsible for uh, mm, auditing Class A and Class B manufacturing sites. Special type of devices they are going to have the audit process. Not all medical devices, you are saying, right? Yes, sir. Class A and Class B only. Class A and Class B. And who is going to give them the authority to audit the manufacturing site of this particular medical devices? National accreditation body, NAB. National Accreditation Body. Yes.
Is there any specific wing in that? Is there any specific body you would like to mention? Uh, no, sir, I am not able to recall. Okay. I would like to know your opinion on the matter that is Drug Technical Advisory Board and Drug Consultative Committee. Two committees are associated with that. One is Drug Technical Advisory Board and second one is Drug Consultative Committee. So what is going to be the basic difference between these two, and what is going to be the specific role in case of medical devices associated with these two committees? The technical advisory body advises on the basis It's a in the board. It's matters a of. board. Drug Technical Yes, Advisory sir. Board. Yes. Yes, sir. It advises in the matters of technical issues such as software related issues and for Technical devices specifically means in case of medical devices what? uh, like uh, like uh, like software issues and issues in programming etc. And the other one, it is like a consulting body, like it provides suggestions for changes which the device can be molded through for better efficacy. Yes. You are having some experience on medical devices or you are a fresher candidate? No, sir, I graduated last year. I don't have any You experience. have graduated last year, right? Yes. Since we have just gone interview with some experienced candidate as well as, so they have also worked with the medical devices department. So as a candidates, in comparison to those candidates, why we should prefer you as a fresher candidates? They are already having the experience in that field. So they are the Yes. most preferable candidates. So why we should hire you? Sir, I think experience always comes with uh, some exposure, and I am always open to such kind of exposure, provided the same time frame which I will be exposed for work. I I can show that I can also expect better results. Apart from that, I am as I am young, and uh, this field demands more amount of like field inspections and other. So I think my young energy can be utilized in that way. So I think I must be given chances for that. So right now at the time of our conversation, what is going to be your actual age right now? 22. 22. Since you are Yes. very young, you are having the age of 22 years. We are having the candidates that are at the last stage of their age. So you are having ample number of opportunities. You'll be getting next opportunities also. You'll be getting the better opportunities in comparison to medical devices. Why more Yes. specifically you are focusing on medical devices? You are having the age. You are having you are having ample number of opportunities, better opportunities in comparison to these medical devices. Then at this age, why you are more focusing on medical devices only? Any specific So reason? first of all, I always wanted to work in some administrative type of work, and which involve some field related work. And concerning the concerning for the student who are on the last stage, and I have ample number of opportunities. So for a fresher candidate, I think this is the best opportunity in the field of medical devices. And for any other like for assistant drug controller and others, the it demands some bit of experience. So for me, it is the best possible opportunity. आपने एक शब्द यूज किया है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। दो Yes, वाक्य होता है, दो शब्द बड़े हमारे जो सरकारें होती हैं उनमें यूज होती है। एक का नाम है शासन और एक का नाम है प्रशासन। तो yes. आप शासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं या फिर प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं? आपकी भूमिका क्या है इस केंद्र सरकार सर, में? मैं प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहा हूँ, क्योंकि हम्म, प्रशासन लोगों को साथ लेके, लोगों के मतों को साथ लेके किया जाता है। और हम्म, शासन शासन में मोनार्की भी आ जाती है, शासन में डिक्टेटरशिप भी आ जाती है, लेकिन हम्म। प्रशासन इट जनरली यूज्ड फॉर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तो मैं प्रशासन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि आप जो है प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं।
तो जी दो सर। शब्द मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके राय इस पे जो है, एक होता है नीति निर्धारण और एक होता है नीति का क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी। यस सर। दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? पॉलिसी बनाना इंपॉर्टेंट है या पॉलिसी का एग्जीक्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, इन योर ओपिनियन? सर इन माय ओपिनियन दोनों पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना अच्छी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। और कितनी भी अच्छी पॉलिसी बन जाए, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ना हो तो वो पॉलिसी फिर किसी काम की नहीं रह जाती। इसीलिए दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर आपकी भूमिका क्या है, नीति निर्धारण में या फिर नीति के क्रियान्वयन में? सर इसमें पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा मेरी रहेगी भूमिका। पॉलिसी मेकिंग में क्योंकि भी आपका रोल है कहीं, एज ए मेडिकल डिवाइस ऑफिसर? सर एज फार एज आई नो, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग तो जनरली CDSCO एंड पार्लियामेंट के द्वारा थ्रू लेजिस्लेशन किया जाता है। तो एज मेडिकल डिवाइस ऑफिसर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन मेरा ज़्यादा काम रहेगा। जिस क्षेत्र में आप काम करने जा रहे हैं वहाँ आपके जूनियर्स भी हो सकते हैं, वहाँ आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं। एक ऑफिसर जी है, कंट्रोलिंग ऑफिसर, जी। इज दैट पर्सन इज गोइंग टू बी योर जूनियर और दैट इज गोइंग टू बी सीनियर, एंड व्हाट एग्जैक्टली दैट पर्सन इज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस पर्सन की, उस व्यक्ति की? सर आर यू टॉकिंग अबाउट असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर और? आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्रोलिंग ऑफिसर। सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस स्पेसिफिक टर्म कंट्रोलिंग ऑफिसर। ओके। एक शब्द आपने कभी ना कभी सुना होगा, रिकॉल, और एक यस शब्द सर। आपने सुना होगा, विड्रॉल। यस इन दोनों शब्दों में कुछ बेसिक डिफरेंस है या फिर दिस बोथ टर्मिनोलॉजी आर गोइंग टू बी सेम, रिकॉल एंड विड्रॉल? और अगर आप कुछ एग्जांपल से, हाल फिलहाल के जो हालिया एग्जांपल्स उनसे अगर आप हमें समझा पाए तो। सर रिकॉल जनरली मीन्स कि uh, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो अपने सारे प्रोडक्ट को, उसमें अगर कुछ कमी आ जाए तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए वापस मार्केट से बुला लेती है। विड्रॉल, कोई भी प्रोडक्ट जनरली बैन हो जाए तो उसके लिए विड्रॉल शब्द का यूज किया जाता है। लाइक अभी गवर्नमेंट ने भी कुछ ड्रग्स को, जैसे पैरासीटामोल एबव 100 mg को बैन किया था, तो उसमें वो विड्रॉल टर्म यूज किया जा सकता है। अभी लाइक रेनिटिडिन एक ड्रग होती है, उसका ब्रांड था जैंटेक, उसको यस विड्रॉ सर। किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, क्या किया गया था यार? रिकॉल विड्रॉल ये कौन करता है, या फिर गवर्नमेंट का इसमें क्या भूमिका है गवर्नमेंट की? सर ये CLA के द्वारा या फिर CDSCO के द्वारा इसको नोटिफाई किया जाता है कि दिस प्रोडक्ट स्टैंड्स विड्रॉल, एंड रेनिटिडीन आई डोंट नो अबाउट। अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट खराब है, कंपनी उसको वॉलेंटरली विड्रॉ नहीं करती है, तो एज ए ड्रग इंस्पेक्टर व्हाट यू आर हैविंग द ऑप्शन? सर आई कैन हैव, like I can go to the inspecting site, I can send it to the medical testing laboratory, and I can then see the issue and stop sale order using form 30 33, and using form 34 I can also seize the product. ओके, सो So डायरेक्टली यू this आर is गोइंग टू सील दैट पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग साइट और टेस्टिंग साइट? if I found any discrepancy in that, then I have that power to do. See, I'm giving you a situation. As a drug inspector, you are visiting a site, manufacturing site, and you are finding it that it is going to be non-compliance or non-conformatory as per your Yes sir. standard. So, what further actions you are going to take in case of that particular, as a responsible drug inspector? Sir, in that case, first of all, I will confirm that whether the discrepancy is real or not. So, for that, I will send the sample to a medical device testing officer. Uh, No, no, upon you receiving are the report, you are sure that they are not going to be adhering with the policy. They are not going to be adherence with the standard. What further yes, action sir. you are going to take? You are Sir, very clear. in They that are case, not compliance. They are not having the compliance. yes, sir. In that case, for public safety, I have to issue an stop sale order, and I have to see that sample. Uh,
one last question we would like to ask from you, since this the terminology is conformity assessment. What exactly do you mean by this terminology, conformity assessment? So this term is generally used to check the quality, safety, and efficacy of a medical device uh, upon its like if it is already given a node by the authorities. So in the last stage, it is done confirmatory assessment. Confirmatory assessment, this is the process or protocol associated with medical device officer or that manufacturer or that regulatory agency. Uh, Sorry, it can be basically it is for different different stakeholders. Like if the guidelines do not exist, then confirmatory assessment is done by the manufacturer itself. And if the guideline exists, You are saying it it is is done done by the manufacturer itself, right? if Are you guidelines don't are exist. you sure? Then Are you sure about this? yes, sir. If there are no specific guidelines, then government can self-certify the devices. No, no, no. You are saying manufacturer itself it is going to have a confirmatory assessment at their own level. You are saying this statement? Uh, yes, sir. If there are no specific guidelines for that device, then manufacturer can do this. Okay. One last question we would like to ask from you, that Yes, as a drug inspector, you have been given the authority to inspect a site. So, what is your going to be the first action you are going to take once you have visited the manufacturing site or testing site? So, what is going to be your first response? sir. I would check whether the proper manufacturing directions are being followed or not. After that, I will check Any the specific uh, document you are going to check out? yes, sir. Like It what? is known Like as what document you are going to have a initial scrutiny? yes, sir. It is known as a product master file and factory plant master file, and these are the first step to be checked. Product master file. You are talking about that some terminology are there, that batch formula record or that particular are you are talking about those terminologies? Master Uh, formula record, batch formula record. You are talking about these two Plant terminologies. master file generally includes uh, the design of plant and whether the plant is operating uh, under the guidelines which and under the directions in which it was approved to be worked or not. Okay. Yes. So थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आपका इंटरव्यू काफी ठीक था, अच्छा था, एंड मेनी एरियाज यू वांट टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर. Yes. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अब अंकित जी, मेरा Okay. ये रियल फीडबैक होगा आपके लिए, अभी तो ऑफिशियली था ये, ठीक है. हाँ जी. अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसा रहा मेरा. ओवरऑल देखिए सब कुछ ठीक है, एक्सप्रेशंस वाज गुड, आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे. और नॉलेज को अगर देखा जाए, बिकॉज फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से आप बिलोंग करते हैं, तो काफी अच्छा खासा नॉलेज है. नॉलेज के टर्म्स में तो मुझे कोई बहुत ज्यादा लूपफुल नहीं दिखाई दिया. बट ये है कि एक चीज बहुत अच्छी लगी, जो शायद पता ना मैंने शेयर किया था उस सेशन में, आपने फॉलो किया नहीं किया, कि जब कोई चीज नहीं आए तो क्लियर कट आप ना बोले, लेकिन बहुत आसान तरीके से उसको बोलो कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ. लेकिन एक होप उन्हें देना है कि नहीं सर, बिल्कुल मैं इस पे काम करना चाहूंगा और इसके बारे में मैं पढ़ूंगा, इसके बारे में. जी. दूसरी चीजें, आपको ये बार बार क्वेश्चन, बिकॉज यू आर ए फ्रेशर कैंडिडेट्स, बहुत सारे मेडिकल हाँ. डिवाइसेस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर. जी. वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम सिस्टम में आए, उस 20 पोस्ट में मैक्सिमम पोस्ट ले आए. और एज ए इंटरव्यूअर देखिए, वो बायस नहीं होते हैं. कोई भी कॉमन आदमी होगा तो वो चाहेगा कि हम इन्हें फ्रेशर को ट्रेनिंग देंगे, ज्यादा से ज्यादा इन्हें ट्रेन करने में निकल जाएगा हमारा समय. हमारे पास तो एक ट्रेन बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है, तो हम इसको प्रेफर करें. तो तो आपको सर इसको इस कैसे आंसर दे सकते हैं इस सारे हाँ, क्वेश्चन. आपको इसमें इस तरीके से आंसर देना है कि जो इनका स्किल सेट, आप पहले देखो कि क्या क्या एज ए मेडिकल डिवाइस ऑफिसर या फिर जिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जा रहे हो, क्या क्या बेसिक स्किल सेट रिक्वायर्ड है, और जो आपकी डिग्री है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपने सीखा है, उन दोनों को मैच कराना है आपको. आपको जी. ये कन्विंस उनको करना है कि वॉट एवर द स्किल सेट यू आर हैविंग, वॉट एवर योर रिक्वायरमेंट इज देयर, वो मैच हो रही है. जी. और यहां पर बात एक्सपीरियंस और उसकी नहीं है, मुझे मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर.
ठीक है, इस तरीके से हम हाँ करेंगे। बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो उनकी स्किल सेट है, जो रिक्वायर्ड है, और जो आपकी स्किल सेट है, दे शुड बी इन अ सिचुएशन ऑफ मैचिंग। ये वाली बात होनी चाहिए आपकी। तो इसको थोड़ा सा करिए। बाकी क्वेश्चंस नहीं आ रहा तो आप अच्छे से डील कर ले रहे हैं, ओवरऑल नॉलेज आपका सही है। बस आप थोड़ा सा कैसे एंटर करना है इस बात पे काम कर लीजिएगा, कैसे बैठना है, क्योंकि अगर ये हमारा सेंटर होता तो हम आपसे फिजिकली सारी चीजें करके देखते। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जाओगे, जब आपको टोकन वगैरह दिया जाएगा, तो यूपीएससी में आपको एक रूम में बैठाया जाएगा, वहां पर आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। कैमरे लगे होते हैं, आप कैसे बैठ रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, एवरीथिंग इज बीइंग वॉच्ड। सो मेक श्योर दैट कि आप अच्छे से प्रॉपरली बैठे हुए हो, बहुत ज्यादा शोर शराबा लोगों से नहीं बात कर रहे हो, अपना प्रोफेशनली बैठे हुए। उसके बाद जब टोकन वगैरह मिल जाता है तो आपको स्पेसिफिक बोर्ड आपका एलोकेट होता है, और बोर्ड में एक चेयरमैन साहब होंगे, यूपीएससी के चेयरमैन नहीं, आपके बोर्ड के, जो आपके बोर्ड होंगे उसमें हाँ तीन जी। मेंबर्स भी हो सकते हैं, चार मेंबर्स भी हो सकते हैं। उसमें दो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज होंगे, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, कुछ सीडीएससी के लोग होंगे। और ये जो मेडिकल डिवाइसेस के इंटरव्यू होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर के होते हैं ना, ये ज्यादातर आपके ओपिनियन से ज्यादा कहीं ना कहीं ज्यादा नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। तो आपको नॉलेज पे जी काफी काम करना है और कुछ ओपिनियन पे काम करना है। वहीं अगर आप सिविल सर्विसेज का दे रहे होते तो शासन प्रशासन, नई पॉलिसीज और दुनिया भर की सारी चीजों पे आपसे जो है पूछे जाते। जैसे अभी आपको बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस पार्क वगैरह खुले हैं, तो उन पे भी थोड़ा सा देखिएगा जी आप। अभी ग्रेटर नोएडा वाले सर। एरिया में खुल रहा है आपका। हाँ जी सर, उज्जैन में, तमिलनाडु में हो रही है। हाँ, तो उसको थोड़ा सा आप देखना अच्छे से, बहुत अच्छे से। बाकी ओवरऑल आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कामली बात कर रहे थे ऐसी बात कर रहे थे। और थोड़ा सर सा और आप, हाँ, एक चीज जो है, आप अगल बगल देख रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको घूर कैसे देखना है पैनलिस्ट को, थोड़ा बहुत तो रिलैक्सेशन होना चाहिए, बट जिस पैनलिस्ट से हम बात कर रहे हैं उनसे तो आई कांटेक्ट होना चाहिए। साथ साथ जो बैठे हुए हैं, उनको ऐसा ना फील हो कि कटे कटे, बिल्कुल उनका कोई मतलब नहीं है। जी चेयरमैन साहब आपका पैनल जो है स्टार्ट करेंगे। द चेयरमैन जो बीच में बैठे होंगे, अगल बगल उनके चेले होंगे, सारे लोग मेंबर्स। जी। चेयरमैन के पास एक कागज हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, आपका डेफ। ही इज गोइंग टू स्टार्ट योर इंटरव्यू, ही इज गोइंग टू फिनिश योर इंटरव्यू। बाकी, इसमें डेफ भरवाया नहीं गया है अलग से। हाँ, डेफ नहीं भरवाया गया, लेकिन आपके एप्लीकेशन से जो है ये उठा लेते हैं इंफॉर्मेशन बेसिक। जो आप एप्लीकेशन में जी भरते हैं ना, उसमें हाँ इंफॉर्मेशन ये उठा लेते हैं वहां से। और इंटरव्यू में दो तीन चीजें हैं। आजकल के इंटरव्यू में खास करके आपका नाम अवॉइड करते हैं पैनलिस्ट। आपकी जी एज, आपका कास्ट, आप कहां से बिलोंग करते हैं, दे आर जस्ट गोइंग टू अवॉइड। उन्हें इससे मतलब नहीं है। दे जस्ट जी। वांट अ कॉम्पिटेंट पर्सन, दे जस्ट वांट अ बेस्ट पर्सन तो दैट सर इज गोइंग टू। इंट्रो बोलेंगे तो इंट्रो में नेम बोलना ठीक नेम रहेगा कि नहीं नहीं? बोलेंगे, वो नेम अवॉइड करेंगे, सीधे बोलेंगे हाँ, तो अपने बारे में कुछ बताइए आप जो है, सीधे। तो अपने बारे में तो जब वो सर बोलेंगे तो आपको भी नाम नहीं बोलना है। अभी आजकल के, ठीक पहले है। साला होता था कि अगर नाम नहीं बोल रहे हैं तो आप नाम बोल सकते थे, लेकिन नाम, कास्ट, ये सब अवॉइड की जा रही पैनलिस्ट द्वारा। जो मेरा अभी यूपीपीएससी लेक्चरर का था रिसेंटली, उसमें मैंने यही ऑब्जर्व किया कि अब हाँ सर, इंटरव्यू। वैसे बिहार पीसीएस में भी नेम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, लेकिन यस। वैसे एक दो लोगों से बात हुई थी, लेकिन वो बोल रहे थे कि यूपीएससी में नेम बोल सकते हो, वहाँ पे अलाउ रहता है। हाँ हाँ, बोल सकते हैं। और लैंग्वेज के लिए कोई इशू है, जैसे मैंने अभी सेशन में एक्सपीरियंस शेयर किया ना, कि मेरा इंटरव्यू खराब हो गया था, मेरा खुद का। बहुत सारे लोगों का जी इंटरव्यू मैंने किया, बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए, लेकिन उस वाले इंटरव्यू में जब उन्होंने हिंदी में बोल दिया तो वहां पर मैं थोड़ा सा फंसा। तो आप हिंदी में भी थोड़ा सा तैयार रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे पैनलिस्ट हो सकता है हिंदी में पूछे। तो जैसे हाँ मैं सर। इंग्लिश में आपसे पूछ रहा था तो आप इंग्लिश में बात कर रहे थे, जहां मैं हिंदी में पूछ रहा था तो आप हिंदी में बात कर रहे थे। तो यही एक पैटर्न रखना है आपको। सर इंग्लिश में मेरी ज़्यादा इंग्लिश में आप ज्यादा डिस्टर्बेंस कंफर्टेबल है। नहीं सर, वो नहीं, जैसे मेरा इंग्लिश ठीक है कि नहीं वो पूछना था। तो ये जो आपने जो इंटीग्रेटेड डिग्री की है, ये जो फार्मास्यूटिकल साइंसेस फार्मेसी डिपार्टमेंट है, उसी से एसोसिएटेड की डिग्री, या फिर कोई अदर डिपार्टमेंट था बीएचयू में? नहीं, सेम ही डिपार्टमेंट से बीटेक एमटेक दोनों हो जाता है। ठीक है। आई वॉज ऑल्सो जी। इन 2016, मैंने जो है वहां से एमफॉर्म के लिए अप्लाई किया हुआ था। और आई आई टी हैव बी बीन एच यू। गिवन द ब्रांच, वहां पर फार्मेसी है, केवल एक ऐसा आईटी जहां पर फार्मेसी है, दैट इज आईटी बीएचयू। एंड आई वॉज जी क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, दैट इज एमफॉर्म। वहां पर जी। एडमिशन के लिए मैं लोकेट हुआ था केमिस्ट्री। और मुझे केमिस्ट्री नहीं पसंद थी उस समय, मुझे सूटिक्स पसंद था, तो इसलिए जो है मैंने सूटिक्स वहां। तो डिग्री मैं, सेम ही रहती है वैसे, बस हम लोग का नाम चेंज रहता है, बीटेक एमटेक हाँ बस हाँ, तो बस। बीएचयू से क्योंकि वो पढ़ाई जेई के करना थ्रू अपने आप में जाते हैं। अच्छी बात है, बड़ी बात है कि आप एक आईटी का टैग आपके ऊपर लग रहा है। जी आपको सर। और फंसाएंगे मैं फ्रेशर कैंडिडेट के तौर पर, जॉब फंसाएंगे के बारे वहां। में ही पूछ सकते हैं, तो उसमें क्या बताएंगे? क्योंकि जो मेरा जॉब था मैंने एक दिन में छोड़ दिया था, तो वो बताना सही रहेगा कि नहीं? कहाँ पर जॉब किया था आपने? सर कोलकाता में था, एक जिला एडवाइजरी एंड ट्रेडिंग कंपनी थी। कितने दिन आपने जॉब किया था? एक दिन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे बहुत गलत इम्पैक्ट जाएगा कि आप कंसिस्टेंट नहीं है किसी जॉब में। आप छिड़िए मत जी उसको। सर। डो नॉट तो मेंशन यहाँ दैट। पे क्या बताएंगे कि जॉब नहीं लगी थी, ऐसा बता सकते हैं?
नहीं नहीं, जॉब के लिए सर आई हैव ट्राइड, क्योंकि रिसेंटली मैंने पिछले साल पास किया। तो जॉब सर मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, बट एज ए ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट जहां पर मुझे जो है प्रशासन का हिस्सा बनने को मिल रहा था, बहुत सारे लोगों से मेरा इंटरेक्शन भी होगा, और जाहिर सी बात है इस फील्ड में जब मैं आऊंगा तो एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर बहुत सारे कानून का क्रियान्वयन करना है, बहुत सारी चीजों का, और इससे मैं कई सारी लाइफ को जो है इम्पैक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि सर सेफ्टी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है, खास करके पब्लिक सेफ्टी जो है हमारी सरकार काफी प्रमोट करती है। जी तो सर। ड्रग इंस्पेक्टर में आप डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पॉलिसी एग्जीक्यूशन में आपका बहुत बड़ा रोल है, और सबसे बड़ा हथियार आपका मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 को एग्जीक्यूट कराना, और कुछ क्लॉजेज आपके ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के इंप्लीमेंट कराते हैं आप लोग। एज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी आपका रोल ज्यादा है, पॉलिसी मेकिंग में ना के बराबर है। जी सर। हाँ, तो ये है। तो चलिए फिर और अंकित जी, ऑल द बेस्ट, अच्छे से दीजिए, बाकी कुछ कोई जी आप सर, पूछना एक दो और डाउट था सर। था? सर, जैसे मैं अभी पीएससी का ही प्रिपरेशन करता हूँ, तो ये बताना सही रहेगा कि नहीं, अगर पूछेंगे कि अभी जैसे क्या कर रहे हो तुम इस साल से। यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं? नहीं, अभी मत बताइए इसके बारे में, क्योंकि फिर बोलेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां तो जर्नलिस्ट है, यहाँ दिस पोस्ट इज स्पेशलिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस। तो जी जर्नलिस्ट में सर। तो आप जिले में जाते हैं, आपको बहुत सारे क्षेत्रों में काम, फार्मा सेक्टर हर सेक्टर को डील करते हो, वहां तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जी मिल रही है। देन वाई यू आर कमिंग फॉर दिस ड्रग इंस्पेक्टर को, जो कि बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज देती है सिविल सर्विसेज के केस में। तब यहाँ आपसे जी क्वेश्चन पुट अप होगा जर्नलिस्ट वर्सेज स्पेशलिस्ट का, कि जर्नलिस्ट बेहतर है कि स्पेशलिस्ट बेहतर है। हाँ। मास्टर तो यहाँ ऑफ, पे ये बोलना सही रहेगा कि मैं पास आउट होके यही मेडिकल डिवाइस ऑफिसर की हाँ, तैयारी कर पास रहा हूँ आउट और। करके सीधे आपने बनाया कि सर मैंने इस पोस्ट के बारे में देखा एंड इट वाज वेरी गुड पोस्ट, और बहुत सारे यहाँ पर पॉलिसी एग्जीक्यूशन का काम था, और सरकार में मैं अच्छा काम कर सकता था सर, और मेरी जो स्किल सेट थी वो मैच कर रही थी, और इसके लिए मैं लगा हुआ था, इसके लिए मैं ट्राई कर रहा था। और कितना, एक साल के अंदर ही आपने फिर जॉब के लिए भी ले लिया, तो आपके पास ज्यादा नहीं, तो आप सीधे ही बोलिएगा पास आउट करने के बाद जो है मुझे ये जॉब अच्छी लगी, इसकी प्रोफाइल अच्छी लगी सर, इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन देख के जाना क्या क्या चैलेंजेस हैं, और वो मेरे स्किल सेट मैच खाए, और मुझे सर अच्छा लगा ये फील्ड, तो मैंने इस चीज को चूज किया, और आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन। और मुझे अगर मौका मिलेगा, एक पॉजिटिव होप के साथ, कि सर अगर मुझे मौका मिलता है सो डेफिनेटली मैं इस देश को और जो है इस फील्ड में काफी अच्छा काम करने वाला हूँ, इस तरीके से एक होप जी के साथ, कि मुझे अगर मौका मिलता है सर तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू वर्क अलॉट ऑन दिस। एक होप के साथ एंड करेंगे इंटरव्यू, और बाकी फिर जब रिटर्न होंगे तो जैसे हम पीछे आएंगे चेयर छोड़ेंगे, तो थोड़ा सा विश करना सभी पैनलिस्ट को, गुड थैंक यू। मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी इस समय रहे, और थैंक यू सो मच सर। इस तरीके से करके दरवाजा बहुत आराम से, बहुत तेजी से नहीं, वो जो लास्ट में चलने वाली आपकी चीजें होंगी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, जल्दीबाजी में नहीं, भागम भाग की स्थिति में नहीं, बहुत नॉर्मल जाना है, दरवाजा बड़े प्यार से बंद करना है, शालीनता से जाना है, ये वाली चीज है। ठीक है सर, वो आपको सेंड किए थे कि डब्ल्यूएस डॉक्यूमेंट, उसको देखे थे आप? ईडब्ल्यू नहीं, एस? वो तो वो मेरा ऑनलाइन ही बन के आया, लेकिन उसको उस पे प्रिंट नहीं, डिजिटली। ऑनलाइन बन के आया है, बट उसका तो रिकॉर्ड होगा ना, अगर वो डिजी लॉकर पे भी हाँ जी शो हो सर। रहा है या कहीं पर भी, तो उसको हाँ फिजिकली हाँ आपको सर। प्रोड्यूस करना पड़ेगा। हाँ, तो उसका प्रिंट लेके जाएंगे तो ठीक है हाँ ना वो? बिल्कुल बिल्कुल, प्रिंट आउट चाहिए। ठीक है सर। ठीक है फिर अंकित जी, बिल्कुल ठीक। ऑल द बेस्ट, ओवरऑल इंटरव्यू और सर, अच्छा, एक और और डाउट था सर। डेफिनेटली मैं चाहूंगा, और मैं चाह रहा हूँ, मैं श्योर भी हूँ कि आप डेफिनेटली आर गोइंग टू बी इन द लिस्ट। अगर इसी तरीके से आपका इंटरव्यू रहा तो योर इंटरव्यू वाज वेरी गुड, इट वाज सेटिस्फैक्टरी। बताइए क्या पूछना सर, था? एक और डाउट था सर। सर, हम्म, वो फॉर्म को सेल्फ अटेस्टेड करने के लिए जो है, वो साइन के नीचे साइन करना होता है, वो कैसे करना होता है? मैंने कभी किया क्या नहीं क्या वैसे। चीज मांगा है उन्होंने, जितने भी फॉर्म्स हैं उनको अटेस्ट करना, सेल्फ अटेस्टेड मांगा है या फिर गेस्टेड ऑफिसर का? सेल्फ अटेस्टेड मांगा है। हाँ, तो सेल्फ अटेस्टेड उस पर लिख दीजिए, सेल्फ अटेस्टेड आपने साइन लिख दीजिए। अच्छा, डेट भी डालना होता है या बस हाँ, डेट सेल्फ डालना होगा, अटेस्टेड डेट और डाल साइन? सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड अंडरलाइन करके नीचे अपना नाम लिख दीजिए। ठीक है। ठीक है अंकित जी, ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाइए, और जो है आपके सपने पूरे हों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपके भी गाइडेंस।